अगर if we can consecrate it, if we can consecrate children in early childhood, then India will be paradise, and tourists will come in India to enjoy paradise, because Lakshmi Narayan will shower fragrance of paradise in the atmosphere of India. इंडिया के एटमॉस्फेयर में, इंडिया की वायु में देयर विल बी फ्रेग्रेंस, सुगंधी आ जाएगी, कहाँ की? स्वर्ग की. एंड टूरिस्ट विल कम हियर टू एंजॉय इंडिया एज पैराडाइज. देयर विल बी नो hypocrisy, no cunning, no cheating in India, and we all shall be treated as gurus, and India will be treated as world preceptor, and we shall feel that in spontaneous powerful flow, shower of Saraswati and goddess Lakshmi will shower upon us, upon our children, upon our adults, upon all persons living in India. So this will be treated as paradise, there is no doubt in it. Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. We shall all be drenched, soaked with the ras of Swarg, with the ras of grace of Lakshmi and Saraswati, and by the grace of Saraswati, by the grace of Lakshmi, we shall be again preceptor of the world, and India will be paradise again. Sri Ram Jai Ram Jai Ram, Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Sri. And the delight, the glimpses of Lakshmi Narayan will be seen in India. और कलेर दोषाय में सर्वे सिंह शब्दाद वृकावे, all the evils of Kali will surely vanish, disappear at the very chanting of spirituality, as wolves run away at the very roar of a lion. Spirituality will make, थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे, spirituality will fill your wallet with all the things you desire. Spirituality will fill your wallet, your jholi, wallet means jholi, with all things you desire, and all the miseries, all the pains, all the shortcomings will be vanished. And हरिरपि निजलोकम सर्वथा व्याय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपलब्ध. एंड बाउंड बाय द कॉर्ड ऑफ डिवोशन, जैसे प्रेम का कच्चा धागा होता है उससे बंध करके भगवान renouncing his divine realm, God will reside in our heart because of spirituality, and such people will get permanent, perpetual peace when they get spirituality. And we all shall not be bewildered by the ups and downs, by the deluding voices of Kali Yuga. There is no place for cunning and craftiness in spirituality, because God likes innocence of the heart. प्यारे प्यारे बच्चों, भगवान को innocence of heart बहुत बहुत पसंद है. Narayan will look after you as a newly procreative cow looks after a newly born calf. It depends upon your thirst, upon your faith, upon your keenness and pining for Narayan, and obeys instructions. Saraswati ki jai. Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. अब हम गॉडेस लक्ष्मी की भी प्रार्थना करते हैं. ओ गॉडेस ऑफ नॉलेज, kindly reside in my speech so that I can narrate Valmiki Narayana, so that I can recite or I can narrate
Valmiki Ramayana. Without thy grace, I am mute. Without thy grace, I am mute. Make me thy lute, so that I can recite Valmiki Ramayana. Give me the discrimination power. बच्चों ध्यान दो, give me the discretion power and also give me the discrimination power as your swan chooses milk from water, as your swan chooses milk from water. सरस्वती जी का नीरक्षीर वेग, उनका हंस है जो नीरक्षीर वेग, वो दूध पानी में से दूध कर लेता है. श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम. The Valmiki Ramayana is read all over India with great reverence, faith and love, because it contains the most authentic, most reliable, most creditable story of Sri Ram, and it is as fresh today as it was during the time of Valmiki, and Valmiki was contemporary of Sri Ram. Contemporary means समकालीन, ये दोनों ही समकालीन थे. It is one of the world's most remarkable classic. It excels in its moral value. You see, this Valmiki Ramayana is didactic. Of course, in Greece, the Greek poet Homer also wrote two epics. Epics means Mahakavya, Iliad and Aeneid. Odyssey and Iliad. Odyssey and Iliad. But they are not didactic. They don't have moral value as this Valmiki Ramayana contains. प्यारे प्यारे बच्चों, the world's first poetry, this is the world's first epic poetry, and I tell you, I narrate or I recite two world's oldest lines, that is Ma nishad tum pratistham gam shashwati sama yat kranch mithnad एकम बलि काम मोहितम. अब प्यारे बच्चों, ये लाइन क्यों निकली? इट वॉज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो. देर वॉज नो एफर्ट फ्रॉम द साइड ऑफ वाल्मीकि. वाल्मीकि डिड नॉट मेक एनी एफर्ट. ये तो अपने आप ही निकली थी. इट वॉज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशन ऑफ कंपैशन फ्रॉम हर हार्ट. ये क्यों हुआ? इसके पीछे एक स्टोरी है, इसके पीछे घटना है. ए वेरी वेरी पैथेटिक event was there. Once Valmiki saw a pair of cranes. Cranes means cronch पक्षी का जोड़ा था एक, and that was moving here and there, and that pair was making a charming, a melodious, a attractive noise, and they were living together. They were not apart. They were never parting from one another. ये इनकी नेचर होती है साथ साथ रहने की. लेकिन तस्मात् तु मिथुनाद एकम, उनमें से एक को, फीमेल और मेल में से मेल को, उसने क्या किया? एक जो फाउलर था वो स्ट्रक डाउन, और ऐसी स्थिति हुई तम शोणित परितांगम चेष्टमानम महितले. That male bird was mortally wounded, and that bird was tossing here and there, up and down, this side and that side, और उछल रहा था, and all limbs were smeared with blood. ऐसी पैथेटिक कंडीशन में ये उनसे अच्छा, because you see that pair was in erotic mood. They were full of lust, lustic. They were full of passion. So that's why in such pathetic condition, Nishamiratim Kronchim Idam Bachanam Bravit, Valmiki saw or heard that Kronchi, that female bird, was crying
was shrieking, was weeping, because the male bird was struck down. Then this sloka, this is Anushtup Chand. Anushtup Chand contains 4 parts, each having 8 letters. So 32 letters in a Anushtup Chand. So this is the first Anushtup Chand in which the whole Ramayana is written, and that is Ma nishaditam pratistam gam shashwati sama yat kraunch mithunad ekam valikam mohitam. Then Valmiki was tormented with the grief of that word, and he was pondering, he was brooding, he was thinking that what is that, how this stanza, how this couplet came from my lips. He was thinking. At the same time, jagam tato brahma lok karta swam prabhu. At that time, Brahma himself appeared, and दम दृष्टवा से तो था, उनको देख के he stood up, but his Valmiki's tongue was tied. कृतांजलि हाथ जोड़ के वो खड़े रहे. तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यू नीड नॉट ब्रूड ओवर, यू नीड नॉट थिंक ओवर एनी मोर, क्योंकि ब्रह्मा प्रहसन लाफिंगली ब्रह्मा सेड दैट यू नीड नॉट थिंक, यू नॉट नॉट ब्रूड ओवर दिस, बिकॉज मच्छंदादेव ते ब्रह्मन प्रवर्तेम सरस्वती. देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, वाल्मीकि को ब्रह्मा जी ने एड्रेस किया है ब्रह्मन. ये बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है कि वो वाल्मीकि किस जाति से थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने उनको ब्रह्मन कहा है. वो कभी पहले कैसे भी रहे होंगे, लेकिन इस टाइम पर तो वो ब्रह्मन ही हैं. इस बात को ध्यान दीजिए. तो अच्छे काम करोगे तो अच्छे ही बनोगे. तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं थ्रू माई विल ओनली दीज वर्ड्स, दिस स्पॉन्टेनियस और फुल ऑफ पावरफुल इमोशन से युक्त दिस, क्या ये जो छंद, ये जो कपलेट अनुष्टुप, दिस हैज कम आउट फ्रॉम योर लिप्स बिकॉज ऑफ माई डिजायर, बिकॉज ऑफ माई विश. इसलिए यू नीड नॉट वरी, यू नीड नॉट ब्रूड ओवर दिस थिंग. और वो कह रहे हैं, आप वैसे कह रहे हैं यथा नारदा सुतम, एज यू हर्ड फ्रॉम नारद यू गो ऑन. एंड अविदितम तद सर्वम विदितम, जो कुछ अभी भी अविदित है वो सारा ही विदित हो जाएगा. और उन्होंने बताया जैसे अंजलि में एक आंवला या हरड़े कोते वो अगर रखी हो वो सर्वविदितम हो जाए, जैसे दिखता है ऐसे ही ऑल द स्टोरी will be shown to you, so nothing will prove false whatever you compose. और ब्रह्मा जी ने कह दिया कुरु राम कथाम पुण्या श्लोक बद्धाम मनोरमाम, यो कुरु राम कथाम श्लोक बद्धाम, इसी अनुष्टुप छंद में आप रामायण को कंपोज करिए. एंड वाल्मीकि रोट 24,000 श्लोकास. रामायण में, वाल्मीकि रामायण में कितने श्लोक हैं? 24. और ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया. क्या आशीर्वाद दे दिया? यावत स्थाशंति गिरिये सर्तिष्य महितले. ध्यान देना बच्चों, यावत स्थाशंति गिरिये सर्तिष्य महितले, जब तक धरती पर पहाड़ और नदियां हैं तब तक तावद रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति. So long as the mountains and rivers exist on the surface of the earth, तो तब तक the theme of Ramayana will continue to be popular. Of course, there are so many Ramayans, but the theme is same. The story is the same. और यावद रामस्य कथा चेत त्वत्कथा प्रचरिष्यति, जब तक ये रामायण कथा प्रचरिष्यति, so long as the narrative of Ramayana composed by you will remain on the earth, you can stay according to your wish. अर्धलोक और उधरलोक, नीचे के लोकों में, नीचे के रीजन्स में और ऊपर के रीजन्स में, अकॉर्डिंग टू योर विश. इत्युक्त्वा भगवान ब्रह्मा अंतर्धीयत. सेइंग सो ब्रह्मा वेंट आउट ऑफ साइट, वो अंतर्ध्यान हो गए.
बच्चों आजकल because of the influence of Western culture in India, the number of atheists is increasing. Atheist, नास्तिक लोग बढ़ रहे हैं. They can go to any extent to enjoy their life. जब उनसे कहा जाता है अरे भाई अन्याय मत करो, ये धरती भी धर्म की धुरी पर टिकी हुई है. This earth exists on the righteousness. This earth exists on the axis of righteousness. ध्यान दो बच्चों, दिस अर्थ एग्जिस्ट ऑन द एक्सिस धुरी ऑफ द राइचसनेस. धर्म की धुरी पर पृथ्वी टिकी हुई है. तो वो फिर क्या कहते हैं कि नो, वो साइंटिस्ट का सहारा लेते हैं और कहते हैं साइंटिस्ट से दैट नॉट ओनली दिस अर्थ बट ऑल द प्लैनेट्स टेक देयर पोजिशन, मेंटेन देयर पोजिशन because of gravitation power. They maintain their position because of gravitation power. Gravitation power बच्चों क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति. But I ask, who created this gravitation power? Who maintains it? Who controls the gravitation power? If even for a fraction of second or even for a fraction of minute there is a disturbance in the control of gravitation, there will be chaos. There will be chaos. We don't know where this earth shall go. पता ही नहीं धरती कहाँ चली जाएगी. And if the earth comes a bit nearer to the sun, we all shall be burned to ashes. सब कुछ खाक हो जाएगा. And if the sea crosses its limits, there shall be water, water and everywhere water. And we shall all be sumptuous diet for whales and crocodiles. There shall be complete annihilation of human race. There shall be complete dissolution of earth and universe. बच्चों कई बार प्रोफेसर्स prophesy about प्रलय, complete dissolution, complete annihilation of human race. बट बच्चों जब तक साधु संत और जब तक कथाएं प्रचलित रहेंगी, so long as the echo of Sanskrit slokas are present in the atmosphere, we are safe. Our earth is safe. So that's why I say that children should be consecrated in early childhood. In a Greek, there is in Greek word tabula rasa, which means blank slate, and the brain of the children is just like a blank slate. बच्चों अभी अभी क्या हुआ कि कुछ विनोदी स्वभाव के लोगों ने मेरे से कहा कि भाई why are you narrating this Valmiki Ramayana in English? So I wish to make it clear that why I am doing or why I am going narrate in English this Valmiki Ramayana, and why not in Hindi? बच्चों time is changing and most of the children are studying in English medium schools.